Hello to all my dear students of class 6th. This is Priyanka Arora once again in front of you, welcoming you all to your maths online class. So students, we were doing chapter number 5, fractions. Today again I will be moving on with the same topic, fractions, and today I will be teaching you exercise 5.3, and the topic which I will cover today is addition and subtraction of fractional number. Okay, so without any more delay, let us begin with question number first of exercise 5.3. So students, question number first of exercise 5.3 is solve the following. Some fractional numbers are there, and in between, in some of the part there is addition sign, and in some of the part there is subtraction sign. So if it is addition, then we have to solve it according to the addition, and if it is subtraction, then we will do subtraction. The one thing which you have to remember, students, is the denominator should be same. डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल नंबर का सेम होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए. अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमारी फर्स्ट स्टेप होगी डिनोमिनेटर को सेम करने की, और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लेते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम. Here you see in A part it is 3/4 plus 5/8. You can see students that the denominators are different. I told you the first step will be to make the denominator same. Denominator को same करने के लिए हम denominator का LCM लेंगे. But student, here I am telling you the shortcut to take the LCM. If the greater denominator is the multiple of the smaller denominator, then the greater denominator will only be the LCM. अगर जो greater denominator है वो smaller denominator की टेबल में आता है तो जो greater denominator होगा वही LCM होगा. तो यहाँ आप देख सकते हो 4 की टेबल में 8 आता है, और you can say that if the greater denominator is divisible by smaller denominator, अगर greater denominator smaller denominator से divisible है, ओके 8 जो है वो 4 से divisible है, 4 से divide होता है completely, तो ये जो 8 होगा यही इसका LCM होगा. तो यहाँ पे आपको सेपरेटली LCM कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली 8 लिख सकते हो. नाउ वंस यू हैव टेकन द LCM, एक बार हमारे पास में LCM आ गया तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और हम LCM को लिख देंगे डिनोमिनेटर में. नाउ यू विल मेक वन ब्रैकेट. अब आप देखेंगे 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है. सो 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, तो उस 2 को आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. देन यू विल पुट मल्टीप्लिकेशन साइन एंड यू विल मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर 3. 4 के ऊपर जो न्यूमरेटर है आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, बीच में लगाओगे आप प्लस का साइन, एंड देन अब आप 8 की टेबल में देखोगे कि LCM 8 कितने टाइम्स आता है. सो इट कम्स 1 टाइम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1. देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द न्यूमरेटर 5. 8 के ऊपर जो न्यूमरेटर है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ सिंपली मल्टीप्लाई इट. सो 2 3s is 6 प्लस 5 1s is 5 अपॉन 8. नाउ सिंपली एड इट. अब आप इसको ऐड करिए. सो 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 8. सो दिस 11 अपॉन 8 विल बी द आंसर. बेसिकली दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहां पर आप देख सकते हो न्यूमरेटर 11 इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर 8. तो कभी भी ये रूल होता है फ्रैक्शंस का कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा आंसर आता है तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं. बट आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होगा तभी हम आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में कैलकुलेट करेंगे. अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं गिवन है तो हम हमारे आंसर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी नोट डाउन कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम 11/8 को 11/8 ही रहने देंगे, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे. जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मींस जब मैं आज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, तब उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होगा. तो उस कंडीशन में जब हमारा आंसर अगर कैलकुलेट होने के बाद में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन भी मिक्स फ्रैक्शन में होगा. यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन में नहीं था तो हम आंसर इम्प्रॉपर में ही लीव कर देंगे, हम इसको आगे फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे. सो विद दिस लेट अस मूव ऑन टू बी पार्ट. बी पार्ट में भी आप देखिए 5 और 15 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो हमें LCM लेना होगा. LCM यहाँ पर भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्योंकि जो ग्रेटर डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर डिनोमिनेटर की टेबल में आता है. ओके, इट इज डिविजिबल बाय 5. 15 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो ग्रेटर डिनोमिनेटर ही क्या हो जाएगा इसका LCM. 15 ही डायरेक्ट इसका LCM आ जाएगा. नाउ अगेन यू विल ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन और आप जो LCM 15 है उसको नोट डाउन कर देंगे. नाउ यू विल मेक वन ब्रैकेट. In the table of 5, 15 comes
3 टाइम्स, तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 3, देन मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर 1. ओके, देन इन बिटवीन यू विल पुट माइनस साइन. अब 15 की टेबल में 15 आता है 1 टाइम, सो वी विल राइट 1 हेयर एंड मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर 1. ओके, नेक्स्ट स्टेप, डू द मल्टीप्लिकेशन. सो 3 minus 3 ones are 3 and 1 ones are 1. So 3 minus 1 upon 15. So 3 minus 1 कितना हो जाएगा students? It will be 2. So 2 upon 15. So this 2 upon 15 is the answer of part B. Here we have done the subtraction. Now next part, 2 upon 9 plus 1 upon 3. यहाँ पर जब आप LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 की टेबल में 9 आता है, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो जो ग्रेटर डिनोमिनेटर होगा वही एलसीएम होगा. दैट मीन्स 9 विल बी द एलसीएम. नाउ हियर वी विल राइट नंबर 9, मेक द ब्रैकेट. इन द टेबल ऑफ 9 कम्स 1 टाइम, सो राइट डाउन 1, मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर 2. देन इन बिटवीन प्लस साइन, अगेन मेक वन ब्रैकेट. इन द टेबल ऑफ 3, 9 कम्स 3 टाइम्स, सो वी विल राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 1. नाउ नेक्स्ट स्टेप, 2 ones are 2 and 3 ones are 3 upon 9. So 2 plus 3 is equals to 5 upon 9. So this 5 upon 9 will be the answer of part C. Let us move on to part D. Here also you can see students that 25 is divisible by 5. 25 5 से divisible है. So LCM यहाँ पर क्या हो जाएगा? Direct 25 will be the LCM. Now we will draw one line, horizontal line. Write down 25 in the denominator. Draw one bracket. In the table of 5, 25 comes 5 times. So write down 5 here. Multiply by the numerator 1. Okay. In between minus sign, again draw one bracket. Table of 25, 25 comes 1 time. So we will write 1. Multiply by the numerator 2. Next step, we will do multiplication. So 5 ones are is 5 minus 1 twos are is 2 upon 25. सो हेयर यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. 5 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन 25. सो दिस 3 अपॉन 25 इज द आंसर ऑफ पार्ट डी. लेट अस नाउ मूव ऑन टू पार्ट ई. पार्ट ई के अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? अगेन 21 इज डिविजिबल बाय 7. 7 की टेबल में 21 आता है, तो दैट मीन्स क्या होगा? जो ग्रेटर डिनोमिनेटर होगा वही एलसीएम होगा. तो 21 ही क्या हो जाएगा यहाँ पर? LCM. So we will draw one horizontal line, write down 21 in the denominator, draw the bracket, open the bracket. In the table of 7, 21 comes 3 times. So we will write 3 here, multiply by the numerator 1. Close the bracket, plus sign. In the table of 21, 21 comes 1 time, multiply by 4. So 1 will be multiplied by 4. Now multiply it. So 3 ones are 3 and 4 ones are 4 upon 21. After multiplication we will get 3 plus 4. अब 3 और 4 को आप ऐड करिए, सो क्या आ गया? 7 upon 21. अब यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? 7 और 21 both the numbers are divisible by the table of 7. 7 की टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं. तो अगर आंसर कैलकुलेट करने के बाद में नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं किसी सेम टेबल से, सो वी विल कैंसिल इट. तो यहाँ पर हम 7 और 21 को कैंसिल कर देंगे. 7 ones are 7 and 7 threes are is 21. सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा आपका 1 upon 3. दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट ई. Let us now move on to part F. Here again the denominators are different. Denominator different है, but आप देख सकते हो 33 is divisible by 11. 33 11 से divisible है, so LCM will be 33 only. So we will draw one horizontal line and write down the LCM 33 in the denominator. Now draw the bracket. In the table of 11, 33 comes 3 times, so we will write 3. Multiply it by the numerator 2. So 3 will be multiplied by 2 minus. In the table of 33, 33 comes 1 time. So we will write 1 here, multiply by the numerator 1. So 1 into 1. Now multiply it. So 3 twos are is 6 and 1 ones are is 1. 6 minus 1 upon 33. So 6 minus 1 will give you 5 upon 33. So this 5 upon 33 is not cancelling further. आप देख सकते हो 5 और 33 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, सो दिस विल ओनली बी द आंसर. और प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आए थे वो कोई भी कैंसिल नहीं हो रहे थे. इसी वजह से हमने जो आंसर आया था वही नोट डाउन किया था. बट पार्ट ई में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे थे, दैट्स व्हाई वी हैव कैंसिल्ड इट.
ओके, सो नाउ जी पार्ट. जी पार्ट में अगेन आप डिनोमिनेटर्स देखिए स्टूडेंट, 2 और 16 है. सो 16 इज डिविजिबल बाय 2. So the greater denominator will be the LCM. So here LCM will be number 16. So draw the horizontal line, write down 16 in the denominator, open the bracket. In the table of 2, 16 comes 8 times. So we will write 8, multiply by the numerator 1. In between we will put minus sign. Again open the bracket. In the table of 16, 16 comes 1 time. So we will write 1, multiply by the numerator 1. Next step we will do multiplication. So 8 ones are is 8 minus 1 ones are is 1 upon 16. Now subtract it. So 8 minus 1 is equal to 7 upon 16. So both the numbers are not cancelling. So this will be the answer of part G. Let us now move on to part H. Here again डिनोमिनेटर 20 इज डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर 5. 20 5 की टेबल से डिविजिबल है. सो द ग्रेटर डिनोमिनेटर विल बी द LCM. सो हियर द LCM विल बी 20. नाउ वी विल ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट डाउन 20 इन द डिनोमिनेटर, ओपन द ब्रैकेट. In the table of 5, 20 comes 4 times. 4 will be multiplied by the numerator 3. In between plus sign. In the table of 20, 20 comes 1 time. 1 will be multiplied by 13. Okay. Next step, do the multiplication. 4 into 3 is equals to 12 and 13 into 1 is equals to 13 upon 20. Okay. Now we will do addition. So 12 plus 13 is equals to 25 upon 20. यहाँ पर after addition you will get 25 upon 20. Now again 25 and 20 are cancelling by the table of 5. Both the numbers are coming in the table of 5, numerator and denominator. So we will cancel it by the table of 5. So after cancelling, what you will get? 5 5s are 25 and 5 4s are 20. So now our answer will be 5 upon 4. So ये 5 upon 4 हो जाएगा आपका answer of part H. Okay. Now let us move on to part I. Again you can notice students that the denominator is 8 and 48. So 48 is divisible by 8. 8 की टेबल में 48 आता है 6 times. So if 48 is divisible by 8, so greater denominator will be the LCM. So यहाँ पर LCM हो जाएगा हमारा 48. So we will draw one horizontal line, write down 48 in the denominator, open the bracket. Table of 8, 48 comes 6 times, multiply by the numerator 1, put minus sign. Then again open the bracket. In the table of 48, 48 comes 1 time. So 1 will be multiplied by the numerator 5, close the bracket. Then 6 ones are is 6 and 5 ones are is 5. 6 minus 5, in between minus sign is there. So I have put minus sign. So 6 minus 5 will give you 1. So 1 will come in the numerator and 48 will come in the denominator. So 1 upon 48 will be the answer of part I. So let us now move on to the last part of question number first, that is part J. Here also you can see students in the denominator 12 and 24 is there. So 24 is divisible by 12. 12 की टेबल में 24 आता है. So greater denominator will be the LCM again. So LCM here will be number 24. So draw the horizontal line, write down denominator 24, open the bracket. In the table of 12, 24 comes 2 times, so write down 2, multiply by the numerator 1, close the bracket, plus. In the table of 24, 24 comes 1 time, so write down 1, multiply by the numerator 3. Next step, do the multiplication. 2 ones are 2 and 3 ones are 3 upon 24. Now simply add it. So 2 plus 3 is equals to 5 upon 24. So this will be the answer of last part of question number first, 5 upon 24. I hope students question number first is clear to you. Now let us move on to question number second, which is quite similar to question number first, but there the questions, the parts which are given are in mixed fractions. So let us move with that question, then I will be explaining that how you have to do it. Okay. So students, here again we have to do the addition and subtraction of fractional number, but as I told you,
all the parts you can see are given in mixed fraction. So whenever the parts are given in the mixed fraction, then first step is to convert the mixed fraction into improper fraction. पहले हम इन mixed fraction को improper fraction में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? हम पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 1 4 एंड उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. सो 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4 प्लस डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई बाय होल नंबर 3. सो 2 3s is 6 plus 1 7. So here it will come 7/2. Now again the denominators are different, so we have to make the denominator same by taking the LCM. Here again you can see that the greater denominator is divisible by the smaller denominator. 4 is divisible by 2, so the LCM here will be number 4. Okay, now we will draw simply one line, write down this denominator 4, then open the bracket. In the table of 4, 4 comes one time, multiply by the numerator 5. In between we will put addition sign. In the table of 2, 4 comes 2 times, multiply by the numerator 7. Now next step, simply do the multiplication. So 5 1s are 5 and 7 2s are is equal to 14/4. Now add it. So 14 plus 5 is equals to 19/4. Here you can see students that the answer is in improper fraction. अब जो हमारे पास आंसर आया वो improper fraction में, where numerator is greater than the denominator. So as I told you in the previous question, if the question is given in the mixed fraction, अगर कभी भी question mixed fraction में होगा और आंसर अगर improper में कैलकुलेट हो रहा है, तो हम आंसर को भी mixed fraction में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप 19 को 4 से डिवाइड करिए. सो 4 4s is 16, सब्ट्रैक्ट करिए, आगे आपके पास में 3. नाउ हाउ टू कन्वर्ट इट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन? जो आपके पास में क्वेश्चन आया है 4, दैट विल बी द होल नंबर. ये आपका होल नंबर हो जाएगा. रिमाइंडर में जो 3 आया है ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और जिस नंबर से आपने डिवाइड करा है दैट विल बी योर डिनोमिनेटर. सो बेसिकली these both are the answer. ये दोनों ही आंसर्स काउंट होंगे. आप और लगा के दोनों फॉर्म के अंदर इसको मेंशन कर सकते हैं. 4:3/4. आप वापस चेक कर सकते हो. 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 + 3 19. सो इट इज 19/4 only. We have converted it into mixed fraction because our question was also given in mixed fraction. So let us now move on to the next part. It is again given in mixed fraction. So firstly we will convert it into improper fraction. So multiply 6 and 2. So 6 2s are 12 plus 5. So 12 plus 5 is equals to 17. That will come in numerator and 6 will come in the denominator. The denominator will remain same only. Now minus again. Here firstly you can mention the denominator as it is. 12 multiplied by 1. So 12 1s is 12 plus 1 is equals to 13. Okay. Now again the denominators are different, 6 and 12, but 12 is divisible by 6. So greater denominator will be the LCM. So LCM here will be number 12. Now draw one horizontal line, write down 12 in the denominator. Open the bracket. Table of 6, 12 comes 2 times, multiply by number 17. In between minus sign. Table of 12, 12 comes 1 time, multiply by 13. Okay. Now simply multiply it. So 17 2s is equals to 34 and 13 1s is equals to 13/12. Now 34 minus 13 will give you the answer as 4 minus 3 1 and 3 minus 1 is equals to 2. 21/12. Okay. Now here you can see that 21 and 12 both are cancelling by the table of 3. ये दोनों नंबर 3 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, बट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले हम देखेंगे कि क्या जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है वो किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है. अगर वो कैंसिल हो रहा होगा तो फर्स्ट स्टेप हमें उसको कैंसिल करना होगा, फिर हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ 21 और 12 दोनों ही 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे. 3 7s are 21 एंड 3 4s are 12. तो हमारे पास में जो आंसर आया है वो क्या आया है? 7/4. अब हम इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ. आप देखिए 4 की टेबल में 7 से स्मॉलर कौन सा नंबर आता है? 4. 4 1s are 4. सो दैट 1 विल कम इन द सेंटर. 7 में से 4 हमने यूज में ले लिया. हाउ मच इज रिमेनिंग? 3. सो दैट 3 विल कम इन द न्यूमरेटर एंड 4 विल कम एज इट इज इन द
denominator. So 1:3/4 is the mixed fraction of 7/4. Check कर सकते हो आप, 4 1s are 4 plus 3 7, 7/4 only. So like this you can solve it. Let us now move on to part C. It is 5:1/2 minus 2:3/4. Again the mixed fraction is given, so we will convert it into improper fraction. So multiply it. 2 5s are 10 plus 1 11. So first fraction is 11/2, in between minus sign. Now 4 into 2 is equals to 8 and 8 plus 3 is equals to again 11/4. So 11/2 minus 11/4. Again the denominators are different, so we will make the denominators same by taking the LCM, and here 4 is divisible by 2. So greater denominator will be the LCM, so LCM here will be number 4. Draw one horizontal line, write down 4 in the denominator. Open the bracket. In the table of 2, 4 comes 2 times, multiply it by the numerator 11. In between minus sign, table of 4, 4 comes 1 time, multiply it by the numerator 11. Now, next step, just multiply it. 11 2s is 22 and 11 1s is 11/4. Now, 22 में से जब आप 11 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में आ जाएगा 11/4 ओनली. ओके, अब ये 11/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज आवर क्वेश्चन इज गिवन इन द मिक्स फ्रैक्शन. डायरेक्टली कर रही हूं मैं. 4 की टेबल में 11 से छोटा नंबर आता है 8 एंड इट कम्स 2 टाइम्स. सो इन द सेंटर आई विल राइट 2. सो 11 में से हमने 8 यूज में ले लिया. सो हाउ मच इज रिमेनिंग? 3 इज रिमेनिंग. सो दैट 3 विल कम इन द न्यूमरेटर and in the denominator will come number 4 as it is. So this both are the answer of part C. So let us now move on to part D. Part D में देखेंगे आप स्टूडेंट्स, हमें वापस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो पहले आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करिए. 12 1s is 12 plus 1 is equals to 13/12 plus 14 into 2 is equals to 28. 28 plus 3 is equals to 31/14. Okay, so like this I have converted it into improper fraction. अब next step में हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर सिमिलर है या नहीं है. तो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 12 और 14. अब यहाँ पर जो ग्रेटर डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर डिनोमिनेटर से डिविजिबल नहीं है. 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 12, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम नहीं मेंशन कर सकते हैं. तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो छोटे डिनोमिनेटर से डिविजिबल नहीं है, तो उस केस में हमें सेपरेटली एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो वही हम करेंगे. यहाँ पर 12 और 14 का हम ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम. तो 12 और 14 का एलसीएम आपको लेने आता ही है. आप 2 के टेबल से लेंगे. 2 6 12 एंड 2 7 14. अगेन बाय द टेबल ऑफ 2, 2 3 6, 7 एज इट इज. नाउ बाय द टेबल ऑफ 3, 3 1 3, 7 as it is. Now by the table of 7, so 1 and 1. So like this you will take the LCM if you are unable to take it directly. अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. नंबर्स क्या आए हैं? 2 into 2 into 3 into 7. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM क्या आ जाएगा? आप देखिए, 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 7s are is equal to 84. तो हमारा LCM यहाँ पर कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट्स 84. Now the procedure will remain same. अब प्रोसीजर वही रहेगा जैसा हम कर रहे हैं. 84 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. Open the bracket. In the table of 12, 84 comes 7 time. Multiply it by the numerator 13. Then in between plus sign, table of 14, 84 comes 6 times. So write down 6 here. Multiply it by the numerator 31. Next step, do multiplication. So 13 7s is equal to 91. So we will mention here 91 plus 31 into 6 is equals to 6 1s are 6 and 6 3s are 18. 186/84. So this is the calculation of multiplication. Now in next step we will add it. Next step में हम इसको add करेंगे. तो देखिए 6 plus 1 is equal to 7. 9 plus 8 is equals to 17 and 2. So 277/84. This is our improper fraction of this particular part. Now, this improper fraction also we have to convert into mixed fraction. So see how we will be doing it. इसको भी अगर हम डायरेक्ट करें तो कैसे कर सकते हैं?
84 की टेबल में 277 से स्मॉलर नंबर हमें चाहिए, तो हम 84 3 टाइम्स देखते हैं कि क्या आएगा। 3 4 इज 12, 3 8 24 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25. So 3 टाइम्स आ रहा है 252 विच विल बी नियरेस्ट टू 277. सो ये जो 3 आया है इसको हम सेंटर में लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया सेंटर में होल नंबर 3. अब 277 में से 252 हमने यूज में लिया है, तो हम क्या करेंगे 277 में से 252 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2. तो रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पर 25. ये जो 25 है ये आ जाएगा हमारे पास में न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम एज 84. सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट D. Let us now move on to part E. It is 11 is to 2 upon 3 plus 7 is to 1 upon 6. Again the question is given in mixed fraction, so we will convert it into improper fraction. So multiply 3 11s are 33 plus 2 is equals to 35 upon 3 plus 6 7s is 42 plus 1 is equals to 43 upon 6. So now in next step we have to take the LCM. So here 6 is divisible by 3. 6 3 से divisible है तो LCM यहाँ पे direct हो जाएगा 6. Draw one horizontal line. Write down 6 in the denominator. In the table of 3, 6 comes 2 times. So write down 2 multiply by 35. In between plus sign. In the table of 6, 6 comes 1 time. So 1 multiply by 43. Next step we will do the multiplication. So 35 2s is equals to 70. And 43 ones is equals to 43 upon 6. So add it. After addition, you will get 113 upon 6. Okay. Now we have to convert it into mixed fraction. इसको हम mixed fraction में convert करेंगे तो आप क्या करिए यहाँ पर 113 को 6 से divide कर लीजिए. So 6 ones is 6. 11 minus 6 is equals to 5. Bring this 3 down. Now 6 8s are 48 and 6 9s is 54. So we will take 8 times 48. So 53 minus 48 is equals to remainder 5. Remainder क्या बच गया 5. तो इसको जब हम mixed fraction में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 is to 5 upon 6. This will be the answer in the mixed fraction. Okay students? So pay attention now on part F. It is 7 is to 2 upon 21 minus 3 is to 1 upon 7. Again convert it into improper fraction. So 21 into 7. 7 ones are 7 and 7 twos are 14. So 147 plus 2 is equals to 149 upon 21 minus 7 threes are 21 plus 1 is equals to 22 upon 7. Now we have to take the LCM and here the greater denominator is divisible by the smaller denominator. 21 is divisible by 7. So here the LCM will be 21. So simply you have to draw one line, horizontal line and write down LCM 21. Open the bracket. Table of 21. 21 comes 1 time. So 1 will be multiplied by the numerator 149. Now table of 7. 21 comes 3 times. So 3 will be multiplied by 22. Next step, do the multiplication. 149 ones is 149 and 22 3 times is equals to 66 upon 21. Now you have to subtract it. अब इसमें से simply आप subtract करिए. So 9 minus 6 is equal to 3 and 14 minus 6 is equal to 8. So 83 upon 21. यहाँ आ गया 83 upon 21. Now again it is in improper fraction, so we will convert it into mixed fraction. So कैसे हम इसको mixed fraction में convert करेंगे? आप 83 को क्या करेंगे 21 से divide करेंगे. So 21 4 times is 84. 21 4 times हो जाएगा 84. तो हम 21 3 times लेंगे. यहाँ पर क्या आ जाएगा 63. Subtract करेंगे आप. 3 minus 3 is 0 and 8 minus 6 is 22. So the remainder is 20. जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 is to 20 upon 21. So like this you will get the answer of part F. Okay, so let us now move on to part G. It is 13 is to 2 upon 7 minus 1 is to 1 upon 35. So convert it into
improper fraction. So 13 sevens is equal to 91. 91 plus 2 is equals to 93 upon 7 minus 35 ones are 35 plus 1 is equals to 36 upon 35. Okay, we have converted it into improper fraction. Now we have to take the LCM of denominator. Now the greater denominator 35 is divisible by the smaller denominator 7. 7 की टेबल में 35 आता है तो greater denominator ही यहाँ पर LCM हो जाएगा. So LCM is equal to 35. Draw the horizontal line, write down 35, then open the bracket. Table of 7, 35 comes 5 times, multiply by 93 minus table of 35, 35 comes 1 time, multiply by 36. Now 93 into 5, 93 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे so 5 3s are 15, 5 9s are 45 plus 1 46. So 465 minus 36 upon 35. Okay, so now simply we will do the subtraction. अब आप subtraction करेंगे. So देखिए 465 में से हम subtract करेंगे 36 को. So 15 minus 6 is equal to 9, 5 minus 3 is equals to 2 and 4 as it is. So 429. So यहाँ पर हमारा result आ गया 429 upon 35. Now we have to convert this 429 into mixed fraction. So mixed fraction में convert करने के लिए हम क्या करेंगे? 429 को हम divide करेंगे 35 से. So 35 ones is 35. So we will write here 35. Then subtract it. 12 minus 5 is equal to 7. Since this 4 has given borrow to 2, so this will become 3. So 3 minus 3 is 0. So we will bring this 9 down and 35 2s is equal to 70. 79 minus 70 is equals to 9. So 12 will come as a whole number, 9 in the numerator and 35 in the denominator. So 12 is to 9 upon 35 is the answer of part G. Okay students, so this is how we can do the addition and subtraction of fractional number if it is given in the mixed fraction. Fine. So this particular question is having 3 more parts. But I suppose now you know very well how to solve these questions. So remaining 3 parts you do it yourself, and if you find difficulty then ask me in the live class. So with this I have explained question number 2. Now let us move on to question number 3. So students, question number 3 is again related to the addition and subtraction of the fractional number, but here addition and subtraction are given together. In previous 2 questions there was either subtraction or addition in the one particular part, but here in one particular part addition and subtraction both are given. So please pay attention how to solve it. This particular question is again given in a mixed fraction. So we will firstly convert it into an improper fraction. So see, firstly convert it. So 12 3s is equals to 36 and 36 plus 5 is equals to 41 upon 12 as it is, minus 9 4s is 36 and 36 plus 4 is equals to 40 upon 9 as it is. In between minus sign was there, so I have put minus. Next plus sign is there, so I am putting plus, and converted 3 3s are 9 plus 1 10 upon 3. So here again the denominators are different. Now whenever 3 denominators are there, then you have to take out the LCM. No, don't write it directly. So 12, 9 and 3. By the table of 2, 2 6 are 12, 9 as it is, 3 as it is. Again by the table of 2, 2 3s are 6, 9 as it is, 3 as it is. By the table of 3, 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Again by the table of 3, 1, 1 and 1. Now simply multiply it. 2 into 2 into 3 into 3. So 2 2s are 4 and 3 3s are 9 and 9 4s is equal to 36. So we have got the LCM as 36. So since we have got the LCM, so we will draw one horizontal line and write down 36 in the denominator. Open the bracket. In the table of 12, 36 comes 3 times, multiply it by 41, minus sign. Table of 9, 36 comes 4 times, multiply it by numerator 40, plus table of 3, 36 comes 12 times, multiply it by the numerator 10. Okay, next step, multiply. So 41 into 3, so 3 1s are 3 and 3 4s are 12. So 123 minus
40 into 4 is equals to 160 plus 12 into 10 is equals to 120 upon 36. Now see students, in this step, this 123 is with plus sign, no sign that means plus, and this 120 is also with plus sign. ये दोनों plus sign वाले numbers हैं. तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों को साथ में रख लेंगे. 123 और 120 को हम combine रखेंगे and 160 will come separately upon 36. Now add it. अब 123 और 120 को आप पहले add करिए. So after addition you will get 243. यहाँ पर add करने के बाद में आपको 243 मिल जाएगा. 0 plus 3 3, 2 plus 2 4 and 1 plus 1 2. 243 minus 160 upon 36. Now 243 में से हम 160 को subtract करेंगे. तो जब आप इसको subtract करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा 3 minus 0 is equals to 3. 14 minus 6, because 4 minus 6 is not possible. So 4 will become 14 to after taking the borrow from 2. So 14 minus 6 is equals to 8. So we will write here 8 upon, so 83 upon 36. Now 83 upon 36 is in improper fraction. So since the question was in mixed fraction, यहाँ पे भी question mixed fraction में है तो हम आंसर को भी mixed fraction में कन्वर्ट करेंगे. सो 83 को हम डिवाइड करेंगे 36 से. सो यू नो 36 टू टाइम्स इज 72 विच इज नियरेस्ट टू 83, जो 83 के नियरेस्ट है. तो हम यहाँ सेंटर में लिख देंगे 2. 83 में से हमने 72 को यूज में लिया तो कितना बच गया, 3 minus 2 is 1 and 8 minus 7 is 1. So 11 will remain, that 11 will come in the numerator and 36 will come as it is in the denominator. So after conversion you will get 2 is to 11 upon 36 as the answer of part A. So similarly we have to do part B. So pay attention, again we have to convert this mixed fraction into an improper fraction. So 15 into 9 is equals to 135 and 135 plus 7 is equals to 142. So we will write in the numerator 142 upon 15 minus 7 sevens is 49 and 49 plus 2 is equals to 51 upon 7, and this is directly given in proper fraction 4 upon 5 as it is हम note down कर लेंगे. Now pay attention students that again the denominators are different, so we will take the LCM of the denominator. यहाँ पे भी हम direct नहीं लेंगे, 3 terms हैं, 3 fractional values हैं तो हम proper LCM कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्टली बाय द टेबल ऑफ 3, 3 5 are 15, 7 as it is, 5 as it is. Now by the table of 5, 1, 7 as it is and 1. Now by the table of 7, 1, 1, 1. Multiply it 3 into 5 into 7. Now 3 5 are 15 and 15 into 7 is equals to 105. So here our LCM will come as 105. Okay, so now we will draw one horizontal line, write down 105 in the denominator. Now, in the table of 15, 105 comes 7 times. So here we will write 7 multiply by numerator 142. In the table of 7, 105 comes 15 times. So here we will write 15 multiply by 51. Then plus, in the table of 5, 105 comes 21 times. So 21 multiply by 4. Okay. Now next step we will do multiplication. 142 multiply by 7. So 7 2s is 14. Keep 1 in mind. 7 4s are 28 plus 1 29. 7 1s is 7 plus 2 is equals to 9. Now 15 into 51. This we cannot do directly. So we will do the multiplication. आप यहाँ पर 15 को 51 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो 1 5 5, 1 1 1. Here 5 5 is 25, 5 1 5 plus 2 7. So 5 6 7. 765 is the multiplication answer of 15 into 51, 765. And 21 into 4 is equals to 84. So here 84 will come upon 105. Now again you will bring the पॉजिटिव वैल्यू टुगेदर. यहाँ पे भी दो पॉजिटिव वैल्यू, एक 994 और एक 84. इसको हम साथ में ले लेंगे 994 प्लस 84 and 765 will remain separately
अपॉन 105. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हम 994 के अंदर 84 को पहले ऐड करेंगे बिकॉज दीज बोथ आर विथ एडिशन साइन. सो एडिड 4 + 4 is 8, 9 + 8 is equals to 17 and 9 + 1 is equals to 10. So क्या आ गया हमारे पास में? हमारे पास में आ गया 1078 minus 765. इसमें से हमें 765 को सब्ट्रैक्ट करना है. अब आप जब इसमें से 765 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो व्हाट आंसर यू विल गेट? 8 - 5 is equals to 3, 7 - 6 is equals to 1 and 10 - 7 is equal to 3. So we will get 313 upon 105. So it is in improper fraction. So हमें इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. तो आप क्या करेंगे? 313 को 105 से डिवाइड करेंगे. So 105 2 times 210. So we will take 2 times 210 here. Subtract 3 - 0 is 3, 1 - 1 is 0 and 3 - 2 is 1. So what will come? 2 will come in the center as a whole number, 103 in the numerator and 105 in the denominator. So these both will be the answer of part B of question number 3rd. So let us now move on to part C and part D of question number 3rd. Now you can see the denominators are different, so we will make the denominator same. So here two denominators are 20 and one denominator is 40. So here 40 is divisible by 20. यहाँ पर 20 की टेबल में 40 आता है, तो यहाँ हम डायरेक्ट LCM लिख सकते हैं. यहाँ LCM हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 40. So draw one horizontal line, write down 40 in the denominator, open the bracket. In the table of 20, 40 comes 2 times, multiply it by the numerator 11 plus. In the table of 20, again 40 comes 2 times, multiply it by the numerator 17 plus. In the table of 40, 40 comes 1 time, multiply it by the numerator 21. Now next step we will do multiplication. So 11 twos is 22 plus 17 twos is 34 plus 21 ones is 21 upon 40. Now we have to add it. So 4 + 2 6 + 1 7, 2 + 3 5 + 2 is 7, 77 upon 40. So this will be the answer. Since this question was not given in mixed fraction, ये जो question है mixed fraction में नहीं given था, so it is not compulsory to write the answer in mixed fraction. तो ये हमारे लिए compulsory नहीं है कि हम इसका आंसर mixed fraction में find out करें. But अगर आप चाहें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना तो आप कर सकते हैं. 42 80 होता है तो हम 41 ही लिखेंगे 40 और रिमाइंडर बच जाएगा 37 अपॉन 40. तो अगर आप लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो भी करेक्ट है, और अगर नहीं लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में नहीं गिवन था, तो अगर आप 77 अपॉन 40 भी लिखते हैं आंसर तो भी आपका आंसर करेक्ट है. ओके, सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू पार्ट डी. नाउ इट इज गिवन इन द मिक्स फ्रैक्शन. ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 11 2s are 22 plus 3 is equals to 25 upon 11 plus 9 4s is 36 plus 1 is equals to 37 upon 9 plus 1 upon 3 will come as it is. Okay, so now denominators are different, so we will take the LCM of denominator. So it will be 11 9 and 3. By the table of 3, 11 will come as it is. 3 3s is 9 and 3 1s are 3. Again by the table of 3, 11 as it is, 3 1s are 3, 1 as it is. Now by the table of 11, so 1 1 1. So 3 into 3 into 11. So 3 3s are 9 and 11 9s is 99. So our LCM will be 99. Now we will write here the LCM. Now draw one horizontal line, write down denominator as 99. Now open the bracket. Table of 11, 99 comes 9 times, 9 multiplied by 25. Then table of 9, 99 comes 11 times, so multiply it by 37. Then table of 3, 99 comes 33 times, multiply by 1, numerator 1. Now simply we will do the multiplication. So 25 into 9, so 9 5s is 45, 9 2s are 18, 18 plus 4 is equals to 22 plus 11 into 37. So 11 को हम 37 से
मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट 7 7 and then 3 3. So we will get the result as 407. After multiplication we will get 407. So we will write here 407. Now 33 ones is 33. Upon will come 99. Now simply we have to add these three number, क्योंकि ये एडिशन साइन के साथ में ही है तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे. So 225 plus 407 plus 33. ऐड करिए. 7 plus 3 10 plus 5 15. 3 plus 2 5 plus 1 6 and 4 plus 2 is equals to 6. So here our answer will be 665 upon 99. Okay. Or we have to convert it into mixed fraction. So for converting it into mixed fraction, we will divide 665 by 99. So 99 की टेबल में 665 के नियरेस्ट वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं 99 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 5 से. 5 9 is 45. 5 9 is 45 plus 4 is equals to 49. तो ये आ गया 495. सो 5 से तो स्मॉलेस्ट पड़ रहा है, हम क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 6 9 is 54. Again 6 9 54. 54 plus 5 is equals to 59. So 594 is nearest to 665. So we will take it 6 times. So it will come 594. Subtract it. 5 minus 4 is 1 and 16 minus 9 is equal to 7. 71 आ गया रिमाइंडर. तो मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 6:71 upon 99. So this will be the answer of part D. Okay students? So here I have explained you 4 parts of question number 3. There are some more parts in question number 3, but I want you to solve those remaining parts by yourself. And after solving, if you find out, then leave your comment in the comment section. I will cover those points, those parts in my next lecture. So today here only I am ending my lecture. Today I have given you explanation of question number 1 to question number 3 of exercise 5.3, and all these 3 questions were related to addition and subtraction of fractional number. I hope students now you must have understood the method of doing addition and subtraction of fractional number. If any doubt, any confusion, as I always say you are free to talk to me in the live class, or you can leave your comment in the comment section below. Okay students, so please complete this work in your notebook and we will meet back in the next online class. Till then, take care of yourself. Thank you so much.